So in this video, I will just talk about कि process क्या होगा, and after that we will just start executing stuff and finding the right references. Okay, so Figma website है, ये मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ because recently मैंने check किया है कि ये बहुत ही easy to understand है if in comparison with Illustrator और Photoshop वगैरह. सो जैसे ही आप ये ओपन करेंगे वेबसाइट, यहाँ पर फिग जैम का ऑप्शन आएगा. वंस यू क्रिएट अ बोर्ड, यहाँ पर आपके पास एक सिंपल एक प्लेन कैनवस आ जाएगा जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ रख सकते हैं, राइट. सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस और स्टफ. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द बेसिक स्टफ कि भाई स्टार्ट में क्या होना चाहिए और फिर एंड में क्या होना चाहिए, एंड व्हाट विल बी द होल प्रोसेस ऑफ दिस होल सीरीज ऑफ वीडियो. ओके, process, scale it up. Okay. So now let me just clarify a few things. So start is तरह होता है कि once we have this brief from the client, we start working on the mood board and references and collecting references and ideas कि किस तरह से क्या message convey करना है, right? So in this video, I will just work on creating a mobile ad, a smartphone ad, जिसमें scratch से लेकर हम modeling भी करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसमें लाइटिंग, शेडिंग और स्टार्ट के कुछ फ्रेम्स डिज़ाइन, प्री विजुअल बनाना, म्यूज़िक कैसे लेकर आना है, एडिट कैसे होना है, कंपोजिट में क्या क्या करना है, ठीक है, टेक्स्ट की किस तरह से प्लेसमेंट करनी है. सो वो स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक तमाम चीज़ें जो जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो बिल्कुल सारी चीज़ें कवर करेंगे, राइट. So this is the very first video. So if I if I drag things out or delay a few things, so just apologies in advance. Okay. So let's just start it. So the process में सबसे पहला part, as I mentioned, is script. So let me just write things down one by one. Script or start. Okay, script or idea in our case. Okay. सेकंड आपके पास आ जाएगा मूड बोर्ड. कुछ केसेस के अंदर आप रेफरेंसेस से भी स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज बेसिकली द सेम थिंग. ओके, सो दिस इज सो वंस अगेन दिस इज द प्रोसेस विच आई फॉलो. सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है इफ यू मूव अराउंड एंड वर्क इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, बट द आइडिया इज यूजुअली जनरली अराउंड दीज थिंग्स. ओके, सो सेकंड is mood board. Okay, then there is a storyboard. So a storyboard, ideally there should be a storyboard. However, we will not going to cover that, but I can definitely show you guys in a video that how can you achieve that, because in motion design काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप draw नहीं कर पाते, especially me. I'm not really good at drawing. So हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम pre-visual बनाएंगे. Okay, so pre-visual will basically help us in the storyboarding phase as well. However, creating a storyboard is very necessary if you're working with a big team. However, this is just going to be a series of video in which I will just touch every part and every process of it. So once you dive into in any of this process, हर process में आपको सीखने में वक्त लगेगा. उसकी अलग characteristics हैं और उसकी हर topic is very deep. For example, if lighting and shading, you can just learn a lot of things in just that area. This is that a modeling is a lot is on the surface it does look a bit easy, but it's a big it's really a big thing to start and learn it from scratch. But anyways, we will try to understand and थिंक कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इस सीरीज़ में, और आई विल ट्राई टू बी एज मच एज as much. I will try to explain things in the very easiest way as possible for me. Okay, so the second is mood board. Third is pre-visual. Fourth is modeling, then animating,
then rendering. Okay, then compositing. So this is the whole process. और I think हर process की एक video बन जाएगी, which will definitely help you guys to understand कि भाई किस process के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. So this video is about the process and what are the tools we are going to use. Okay, the first कुछ tool sets है हमारे पास जैसे Cinema 4D. Cinema 4D we will be using Cinema 4D mainly. Octane render for rendering, and compositing के लिए After Effects, and we will use Illustrator or Photoshop for texture purposes. Okay, to create these textures and things like that. So this is the whole process which we will be following. So let's just get to it in the next video. Thank you.